Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's session, we are going to look at some of the most important Nobel Prize and Booker Prize winner. Prizes से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में. सिर्फ और सिर्फ ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको ईयर ध्यान रखना है कि किनको किस ईयर में मिला है. और अगर बुकर प्राइज है तो बुकर प्राइज किस पर्टिकुलर वर्क के लिए मिला है. नोबेल प्राइज में आपको वर्क्स याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ईयर और किस राइटर को मिला है. दैट्स इट. So let us look the important list of the writers. First of all, the Nobel Prize is an international award that recognizes people and organizations for their achievement in the fields of physics, chemistry, physiology, literature, and peace. And the award was established by Alfred Nobel, a Swedish inventor, entrepreneur, and businessman who left the majority of his fortune to the Nobel Foundation to fund the prizes. Now, आपको एक तो यहां से ये पॉइंट याद रखना है कि किसने स्टार्ट किया है. सो अल्फ्रेड नोबेल ने इसको स्टार्ट किया था. इनके नाम पे हमें नोबेल प्राइज मिलता है और ये सारे फील्ड ऑफ मोस्टली सारे फील्ड में मिलता है. तो लिटरेचर का हमें देखना है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2024. इन 2024 वी हैव Han Kang. 2023 John Fossey. 2022 Annie Ernaux. 2021 अब्दुल रज़ाक गुरना. सारे राइटर्स के नाम से याद रखने हैं एज इट इज पब्लिकेशन एज इट इज ईयर के साथ. किसी भी राइटर को नहीं छोड़ना. 2020 में वी हैव लुइस ग्लक. 2019 पीटर हैंकी. 2018 ओल्गा टोगाशुक. 2017 काजुओ इशिगुरो. 2016. After 2017 we have 2016, that is Bob Dylan. 2016 is Bob Dylan. Then we have 2013 Alice Munro. 2007 Doris Lessing. 2005 Harold Pinter. 2003 John Maxwell Coetzee. 2001 V.S. Naipaul. 1997 Dario Fo. 1995 Seamus Heaney. 1993 Toni Morrison. 1992 Derek Walcott. 1991 Nadim Godimer. Then 1986 Wolf Soyinka. 1983 William Golding. 1982 Gabriel Garcia Marquez. 1976 Saul Bellow. 1973 Patrick White. 1971 is Pablo Neruda. 1969 is Samuel Beckett. 1962. Okay. Before 1962 we have 1965 Mikhail Sholov. 1964 Jean-Paul Sartre. 1962 John Steinbeck. 1957 Albert Camus. 1954 Ernest Hemingway. 1953 Sir Winston Churchill. 1949 William Faulkner. 1950 we have one more. 1950 is Bertrand Russell. Then 1949 William Faulkner. 1948 T.S. Eliot. 1938 Pearl S. Buck. 1936 Eugene O'Neill. 1934 Ugi Pirandello. 1932 is John Galsworthy. 1932 is John Galsworthy. Then 1930 Sinclair Lewis. 1929 Thomas Mann. 1925 G.B. Shaw. 1923 W.B. Yeats. 1915 Roman Roland. 1913 is Rabindranath Tagore. 1907 is Rudyard Kipling. And 1909 is Selma Lagerlöf. And 1901, that is Sully Prudhomme. So it was in 1901 जहां पे नोबेल प्राइज मिलना शुरू होता है.
इसी लिस्ट में से आपको कुछ राइटर्स है जिनका ओरिजिन याद रखना जरूरी है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेट में कई बार डायरेक्टली ओरिजिन से क्वेश्चन बनता है आपके राइटर्स के। ईयर्स तो याद रखने ही है, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिनका आपको ओरिजिन हम बता दे रहे हैं। सली प्रूदुम सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1901 में फर्स्ट वन टू गेट द नोबेल प्राइज फ्रॉम फ्रांस। देन Selma Lagerlöf was from Sweden, and she was the first female to get the Nobel Prize. Then we have Rudyard Kipling from UK, Rabindranath Tagore from India. Then we have W.B. Yeats from Ireland. We have G.B. Shaw from Ireland. Then we have Sinclair Lewis from US. We have John Galsworthy from UK. We have Ugi Pirandello from Italy. इनका एक और फेमस वर्क है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑर्थर, काफी फेमस वर्क है इनका। नेक्स्ट इज यूजीन ओनील यूएस, पर्ल एस बक, दो ही वाज बोर्न इन चाइना बट ही वाज फ्रॉम यूएस। टी.एस. Eliot UK, William Faulkner was from US. Then we have Winston Churchill UK. Then we have Bertrand Russell. Bertrand Russell was from US. Then we have Ernest Hemingway from US. We have next important is John Steinbeck from US. Samuel Beckett. Next in we have Samuel Beckett from UK. Pablo Neruda, though he used to write in Spanish language and he was from Chile. Patrick White was from Australia. Saul Bellow was from US. Gabriel Garcia Marquez used to write in Spanish language and he was from Colombia. William Golding was from UK. Wole Soyinka was the first African to receive the prize and he was from Nigeria. Next is Nadine Gordimer, South Africa. Next is Derek Walcott. He lived in an island named Saint Lucia Island. Next is Toni Morrison, America. Seamus Heaney was from Ireland. Then V.S. Naipaul, his origin was Indian. He was born in India, but he lived in Trinidad. Next is Harold Pinter from UK. Coetzee was from Australia. Harold Pinter was from UK. Doris Lessing was from UK and Zimbabwe. Next important is Alice Munro from Canada. Next important we have is Bob Dylan from US. Kazuo Ishiguro was born in Japan but his origin is UK. Then we have Louis Gluck from US. Louis Gluck from US. So these are some important Nobel Prize winners which you need to remember with their origin. Now, let us move forward to the Booker Prize. Booker Prize is a literary award that recognizes the best original full-length novel written in English. So अगर आपको बुकर प्राइज रिसीव हो रहा है तो आपने फुल लेंथ नॉवेल लिखा है, नॉवेला नहीं लिखा है, एंड आपका नॉवेल इंग्लिश में लिखा होना चाहिए एंड इट नीड्स टू बी पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड. The prize was established in 1969 and was originally called the Booker Prize for Fiction, but it was renamed the Man Booker Prize in 2002.
So let us look at the list. In 2024, we have work named Orbital by Samantha Harvey. इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है 2024 में बुकर प्राइज ऑर्बिटल वर्क को मिला है समांथा हार्वी। बुकर प्राइज के लिए आपको वर्क्स का भी नाम याद रखना जरूरी है विथ डेट्स एंड द राइटर। 2020 2020 में मिलता है डगलस स्टुअर्ट को फॉर द वर्क सगी बेन। This is the name of the work for which in 2020 Douglas Stewart won the award. Then we have 2019 The Testaments by Margaret Atwood. Then we have 2018. In 2018 Anna Burns received the prize for Milkman. जो यहाँ पे मिसिंग है वो हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। 2017 में वी हैव जॉर्ज सॉन्डर्स फॉर द वर्क लिंकन इन द बार्डो। लिंकन इन द बार्डो। 2016 is Paul Beatty for the work The Sellout. Then we have, okay, let me take a new page only, यहीं पे लिखा दे रहे। So 2016 तक हमने लिख लिया। 2015 is Marlon James for the work A Brief History of 7 Killings. A Brief History of 7 Killings. Then we have 2014. In 2014, Richard Palgrim got the prize for The Narrow Road to the Deep North. Richard Palgrim, and the work was The Narrow Road to the Deep North. To the Deep North. Then we have 2013. Eleanor Catton got the prize. Eleanor Catton for the work Luminaries. In 2012, Hilary Mantel got the prize. For the work Bring Up the Bodies. Bring Up the Bodies. 2011, Julian Barnes for the work The Sense of Ending. यहां से ऐसा नहीं है कि आपको लिस्ट ऑफ नॉवेल्स मिल रहे हैं तो आप पढ़ने लग जाओगे। देयर इज नो नीड टू रीड दीज वर्क्स। बस आपको ईयर, राइटर और किस वर्क के लिए मिल रहा है इतना ही याद रखना है। 2010 हार्वर्ड जैकॉब्सन for the work The Finkler Question. Next, in 2009, we have Hilary Mantel again, and the work is Wolf Hall. Now, the interesting point here is that Wolf Hall is a part of a trilogy.
And the trilogy consists of the two other works, that is Bring Up the Bodies and The Mirror and the Mirror and the Light. Next, 2008, that is the Indian writer Arvind Arik, और आपने नॉवेल का भी नाम सुना होगा, द व्हाइट टाइगर. इस नॉवेल को आपको पढ़ना है, ये आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी जनरली प्रिस्क्राइब रहता है और इससे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन एंड समरी बेस्ड क्वेश्चन नेट में बना हुआ है. 2007 वी हैव एन एंड राइट फॉर द गैदरिंग. Next is 2006, an important writer Kiran Desai for Inheritance of Loss. इस पे काफी क्वेश्चंस बने हुए हैं, इनका ये वर्क पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक और फेमस वर्क है हुलाबैलो इन द गुआवा, हुलाबैलो इन द गुआवा ऑर्किड, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका. किरण देसाई आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट राइटर बनती है. नेक्स्ट इज जॉन बैनविल 2005. John Banville got the prize for The Sea. 2004, Alan Hollinghurst. For the work The Line of Beauty. Next we have is 2003, that is D.B.C. Pettibone. D.B.C. Pettibone. For the work Vermin God Little. Vermin God Little. इनका ओरिजिनल नेम था, इनका जो पेन नेम था वो था पीटर वॉरेन फिनले. 2002 we have Jan Martel for Life of Pi. मूवी भी बनी हुई है इस पे Life of Pi. 2001 Peter Carey for True History of Kelly Gang. नेक्स्ट इज 2000 मार्गरेट एटवुड. मार्गरेट एटवुड एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इन पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं नेट में. मार्गरेट एटवुड फॉर द ब्लाइंड असैसिन. नेक्स्ट इज 1999 J.M. Coetzee, John Maxwell Coetzee फॉर डिसग्रेस. डिसग्रेस टेक्स्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें पोस्ट आर्पेथाइड का थीम भी देखने को मिलता है और ये नेट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से. नेक्स्ट इज 1998 वी हैव इयान मैक इवान एंड ही गॉट फॉर एम्स्टरडैम. नेक्स्ट इज 1997 नेट पर्सपेक्टिव से अदर इंपॉर्टेंट राइटर अरुंधति रॉय. इनको मिला था फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये टेक्स्ट इनका पढ़ा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. 1996 वी हैव ग्राहम स्विफ्ट फॉर लास्ट ऑर्डर्स. Next is 1995 Pet Barker for The Ghost Road. Next is 1994 James Kelman
For how late it was, how late it was, how late. 1993, Roddy Doyle. For Paddy Clark, ha ha ha. Paddy Clark, ha ha ha. 1992, we have Michael Ondaatje. For the English patient. Next in we have is 1991, Ben Okri. For the Femished Road. The Femished Road. Next is 1990, A.S. Byatt. पूरा नाम था एंटोनिया सुजैन डफी. इनको मिलता है पोजेशंस, इनका वर्क है. आइडेंटिफिकेशन में डायरेक्ट पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. 1989 is Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro got for the remains of the day. Next is 1988, Peter Carey. Oscar and Lucinda. ये सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप कहीं से भी नहीं करना है. सेशन थोड़ा लेंदी रहेगा, आपको लगेगा कि बहुत लंबा सेशन है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और प्राइजेस से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस बनते हैं. 1987 इज पेनेलोप लाइवली. मून टाइगर. नेक्स्ट इज 1986, किंग्सले एमिस. For the Old Devil. 1985, Carrie Yulm. The Bone People. Next is 1984, Anita Bruckner. For Hotel Duloc. 1983, J.M. Coetzee. For Life and Times of Michael K. Life and Times of Michael K. Next is 1982, Thomas Keenly. For Sinclair's Ark. Next is 1981, Salman Rushdie. सलमान रुश्दी आपके नेट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट राइटर है. फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन. ये वर्क आपका पढ़ा भी होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इससे. 1980, वी हैव विलियम गोल्डिंग. अगेन इंपॉर्टेंट राइटर, इनका वर्क भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. पर इनको मिला था राइट्स ऑफ पैसेज के लिए. डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आया हुआ है मैच करने के लिए. बस 10 राइटर्स और हैं. 1979, वी हैव पेनेलोप फिट्जगेराल्ड. For Offshore. Next is 1978, Irish Murdoch. For The Sea, The Sea.
Next in we have is 1977, that is Paul Scott for Staying On. 1976, David Story for Saville. 1975, Ruth Parwar Jhabwala for Heat and Dust. Next is 1974, Nadine Gordimer for The Conversationist. The conservation. It was conservationist. Next is 1973, J.G. Farrell for The Siege of Krishnapur. 1972, John Berger for G. 1971, V.S. Naipaul for In a Free State. Next is 1970, that is Bernice Rubens for The Elected Member. And the last one is 1969, P.H. Newby for Something to Answer For. Something to answer for. Now, this is the whole list of the Booker Prize winner. Now, इसके अलावा आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, 2-4 पॉइंट्स है जो याद रखने की जरूरत है कि सलमान रुश्दी का जो वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके लिए एक अवार्ड एक्स्ट्रा डिजाइन किया गया विच वॉज बुकर ऑफ बुकर प्राइज. This was received in 1993 by Salman Rushdie for Midnight Children. इसके बाद सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ही एक और डिजाइन किया गया बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज. बेस्ट ऑफ द Booker Prize, which was received by again Salman Rushdie, Midnight Children in 2008. Then we have Golden Man Booker Prize. ये कुछ exceptions है, ठीक है? Golden Man Booker Prize, which was received in 2018 by Michael Ondaatje for The English Patient. And the last one is Lost Man Booker Prize, which was awarded in 2010 for J.G. Farrell's work Troubles. It was published in 1970, but it got the prize in 2010, Lost Man Booker Prize. So these are the some exceptional prizes that were received by the writers. Now, ये पूरा लिस्ट आपका कवर होना चाहिए. यहाँ पे आपको कुछ राइटर्स मिल जाएंगे. इस पर्टिकुलर जो पीपीटी है मेरा, टू गेट द पीपीटी यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन इट एंड यूल गेट द पीडीएफ देयर. यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टेड भी मिलेगा. शॉर्टलिस्टेड याद रखना जरूरी नहीं है कि किस ईयर में कौन सा प्राइज कौन से राइटर शॉर्टलिस्ट हुए थे, बट आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 2002 में वी हैव अ राइटर रोहिंतन मिस्त्री जो कि इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, एंड हिज वर्क
फैमिली मैटर्स वॉज शॉर्टलिस्टेड, बट आपको यहां से क्या इंफॉर्मेशन लेना है कि रोहिंटन मिस्त्री का एक वर्क है फैमिली मैटर्स. इन द सेम वे, you can see here that in 2000 we have a work by Kazuo Ishiguro, When We Were Orphans. डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आया. सो आपको यहां से सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेना है कि कौन सा वर्क है किस राइटर का, दैट्स इट. बाकी जो विनर है उसको ईयर, वर्क एंड विनर का नाम राइटर का, इतना याद रखना है. प्राइजेस से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर साल क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, कोई भी प्राइज को आपको छोड़ के नहीं जाना है. In my next video, soon I'll cover the Sahitya Akademi Award and Pulitzer Prize as well. Sahitya Akademi Award से भी काफी questions बनते हैं. Sahitya Akademi Award is quite lengthy, इसलिए I'm not covering that particular thing in this video. काफी लंबा session हो जाएगा. So I'll cover it in another lecture, along with Pulitzer Prize, क्योंकि इन सब प्राइजों से आपसे questions डायरेक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट राइटर्स आइडेंटिफिकेशन का. तब तक आप लोग ये दो लिस्ट कवर करो. इट इज ईजी कि एक बार में, इट इज ऑब्वियस एंड पहले कि एक बार में तो याद नहीं होगा. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, प्रिपेयर अ हैंड रिटन लिस्ट. ये मत सोचना कि आई गेट द प्रिंट आउट, आई स्टडी इट ऑनलाइन, ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल है. मुझे भी मालूम है कि मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, बट मैं आपको इसका एक लेक्चर ही इसीलिए डिजाइन करके दे रही हूँ ताकि आप मेरे साथ बैठो विद इन द लेक्चर, थ्रू आउट द लेक्चर बैठो मेरे साथ, वो लिस्ट प्रिपेयर करो आप, और लिस्ट प्रिपेयर करके स्टिक समवेयर. और आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो स्टार्टिंग डेज में रोज एक बार उसको लिस्ट को पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना है ऊपर से नीचे. धीरे धीरे आपको खुद याद होने लगेगा, फिर आप उसको हफ्ते में, महीने में कभी पढ़ लो, तो वो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा वो डेटा. सो दिस इज हाउ कि हम लोग प्राइजेस को याद करते हैं. बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्राइजेस कैसे याद होगा, कैसे याद होगा. इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है. और ये भी नहीं सोचना है कि प्राइजेस छोड़ देते, एक दो ही तो क्वेश्चन बनेगा. एक दो क्वेश्चन के कारण ही लोगों का नेट और लोगों का जीआरएफ रह रहा है. सो इसको आप लोग कवर करोगे. आई होप that you all are liking my sessions, the viewers who are returning back and seeing my videos on a daily basis. I hope that you all are liking my sessions. Okay, now I would like to end the session. Have a lovely day, learners.